Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and I am going to teach you elements of strategic management subject. And we will continue our first chapter, that is part C, strategic intent. And in that, we have to learn about goals and objective, that is meaning. So in this today's session, we will discuss about meaning of goals and definition, and the difference between goal and meaning of goal and objective, and next topic, difference between goals and objective. In earlier session we discussed about the mission. Okay, so at the third level is what, goals and objective, and in that we have to learn about meaning and difference between goals and objective. So first of all, what is goals and objective? Now goals and objective are the end result which an organization strive for. That means it is an end result which an organization would like to achieve in future. Now it should be noted that this end result may be expressed in different way, that is qualitative measurement. Now qualitative measurement such as example, market leadership, profit maximization, etc. And another measurement, that is quantitative measurement. Now, quantitative measurements such as a certain percentage of increase in sales in a particular year. Another example, a 10 percentage of increase in profit of net worth of the company. So these are the quantitative measurement. Okay, so जो end result है, this can be expressed in two way, that is qualitative measurement and next is what, quantitative measurement. Qualitative मतलब खाली define करना, that is market leadership, profit maximization. क्वांटिटेटिव मतलब उसमें कुछ मेजरमेंट होना चाहिए, दैट इज परसेंटेज एक्सप्रेस होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए. सो एग्जांपल, सर्टन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स इन पर्टिकुलर ईयर. सो एग्जांपल, 10% ऑफ इंक्रीज इन सेल्स इन अ पर्टिकुलर ईयर. ओके, 20% increase in profit of net worth of the company. So this end result may be expressed in two way, that is qualitative measurement and quantitative measurement. Now the question is, for which result the term objective should be used and for which result the term goal should be used. Okay, so question arise होगा कि कौन से रिजल्ट के लिए ऑब्जेक्टिव यूज करना है और कौन से रिजल्ट के लिए गोल यूज करना है. Okay, now this problem arises because these two terms are used interchangeably. इंटरचेंजेबली मतलब मीनिंग वन एंड द सेम थिंग. तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली अराइज होगा बिकॉज ये जो टर्म है, दैट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, आर यूज इंटरचेंजेबली. यानी आइधर आप गोल यूज करो या आइधर ऑब्जेक्टिव यूज करो, दिस टू टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली. एंड इंटरचेंजेबली का मतलब क्या होता है, meaning one and the same thing. So lastly we conclude, what is goals and objective? Goals and objective may be defined as what, end result which an organization seek to achieve in future. क्लियर, आपको समझ में आया व्हाट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव? सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट एंड रिजल्ट जो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है इन फ्यूचर. ओके, और जो भी एंड रिजल्ट है वो टू वे में एक्सप्रेस होता है, दैट इज क्वालिटेटिव मेजरमेंट एंड द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. सो प्रॉब्लम ऑलवेज, सो क्वेश्चन अराइज होगा कि कौन से रिजल्ट के लिए गोल यूज करना है और कौन से रिजल्ट के लिए ऑब्जेक्टिव यूज करना है. तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस अराइज होता है बिकॉज बोथ दिस टू टर्म आर यूज इंटरचेंजेबली. एंड इंटरचेंजेबली का मतलब क्या है, मीनिंग वन एंड द सेम थिंग. क्लियर? Now next, differentiate between goals and objective. Now first, now these differences we have to learn based on the points. Okay, so first point, on the basis of time frame. Now on the basis of time frame, goals are timeless and unending, whereas objectives are temporal and the time based. Okay, so goals are what, goals are timeless and unending. So example, the survival. ओके, मार्केट में सर्वाइव करना है. ओके, सो द सर्वाइवल एज अ गोल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नेवर कंप्लीटली अटेन सिंस फेलियर इज ऑलवेज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी. तो ये गोल कैसा हुआ, टाइमलेस एंड अनएंडिंग. सो हमारा गोल क्या है, सर्वाइव करना है, यानी बिजनेस को सर्वाइव करना है. ओके, दैट इज सर्वाइवल एज अ गोल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सर्वाइवल गोल
कब तक अचीव नहीं होगा? जब आपको पता नहीं चलेगा कि फेलियर आया। ओके, या इन शॉर्ट जब तक फेलियर नहीं होता है तो हम लोग का ये सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव चलता रहता है। ओके, सो ये गोल्स जो है ना ऑलवेज क्या है, टाइमलेस एंड अनएंडिंग, बिकॉज सर्वाइवल एक गोल ऑफ द बिजनेस है which is never completely attained since failure is always a future possibility, whereas objectives are what, temporal and the time phased. Best example is what, 10% increase in sales in a particular year. In a particular year में 10% sales में increase करना है तो करना है. So objectives are what, temporal and the time bound, that is what, time phased. So on the basis of time frame, goals are timeless, whereas objectives are what, time phased. Second point, on the basis of specificity. Specificity and specific. Okay, so goals are stated in a broad and a general term. Okay, it is stated in a broad and general term, whereas objectives are much more specific. It is what, much more specific. Okay, now goals are stated in a broad and a general term. Same example ले रहे कि survival as a goal of a business is not very specific because it leads to different interpretation of the state of the survival, that is time period of survival, with which product, with which businesses has to be survive. So खाली survival जो ये उसका गोल है ना वो स्पेसिफिक गोल नहीं होता है, बिकॉज जो सर्वाइवल है उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन रहेगा। ओके, यानी कितने टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव करना है, किसी कौन से प्रोडक्ट के साथ सर्वाइव करना है, कौन से बिजनेसेस के साथ सर्वाइव करना है। सो गोल्स आर स्टेटेड इन अ जनरल टर्म एज वेल एज इन अ ब्रॉड वे, whereas objectives are much more specific, stated in terms of particular result that will be accomplished by a specific date. So goals एकदम specific रहता है। ओके, एंड गोल ऑलवेज एक्सप्रेस होता है कि पर्टिकुलर रिजल्ट दैट विल बी accomplished बाय अ स्पेसिफिक डेट, यानी रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अचीव करना है। इट इज वॉट, मच मोर स्पेसिफिक. सेम एग्जाम्पल के अचीवमेंट ऑफ 10% ऑफ ग्रोथ इन नेट सेल्स इन द नेक्स्ट ईयर. सो इट इज मच मोर स्पेसिफिक कि सेल्स में ग्रोथ करना है, कितना ग्रोथ करना है, तो 10% कब करना है, तो नेक्स्ट ईयर में करना है. सो ऑब्जेक्टिव्स आर much more specific. So on the basis of specificity, goals are broad and a general term, whereas objectives are what, much more specific. And last, on the basis of measurement. Now on the basis of measurement, generally goals are set in a qualitative and relative terms. Okay, and generally goals qualitative term में define होता है, whereas objectives are generally expressed in a quantitative and absolute term, percentage, that is what, absolute term में. Okay, so easy है कि on the basis of measurement goals are expressed in a qualitative and relative term, whereas objectives are expressed in a quantitative and absolute term. Example, goals are qualitative in nature. So example, to acquire leadership position in its industry sector. So this goal may not be achieved in any 1 year, but that is why it is what, timeless. Okay, so ये कौन सा हुआ, objectives are qualitative and relative term. Clear? Whereas objectives are what, objectives are expressed in a quantitative and absolute term. Same example, okay, to acquire 20% growth in its sales in the next year. Clear? So on the basis of measurement, goals are qualitative, whereas objectives are quantitative in nature. Clear? So in this session we discuss about what is goals and objective and the difference between goals and objective. Clear? Now in the next session we will discuss important topic, that is role of objective. And objectives का क्या importance है, क्या functions है, that is role or the functions of the objective. Okay, bye, take care student.